So, last time, as we have discussed that this for loop is also make used to make for make repetitions, and if you want to get the couple of statements repeated through this while, and the same thing can also be done through for loop. Okay, so if you look back, then you'll find that how to use the for loop, because in the for loop we require one control variable like this, and after control variable we need to have in operator or in function. Then you can use any object here, maybe a list, tuple, or dictionary, or you can use the range function as well. So what happens in the range function, uh, see here, this is a control function, control variable, and here this is a collection. It could be range or any collection like list, or tuple or dictionary or a string, anything, any object you can choose here. And if you replace that collection by range, what happens? The range begins from 0. Range begins from 0 and goes up to n minus 1. Whatever integer you specify along with the range will begin from 0, and the number is specified minus 1. So see here, I have taken one example. This is the syntax for v in collection, चाहे वो string हो, चाहे वो range हो, कुछ भी हो. And as long as this identifier lies within this collection, it keeps on repeating these statements. यानी जब तक ये जो वेरिएबल है वो इस कलेक्शन के अंदर रहेगा, तब तक ये स्टेटमेंट चलते रहेंगे, और जैसे ही ये कलेक्शन से आउट हो जाएगा वैसे ही आप पहुंच जाएंगे एल्स पे. सो एल्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फॉर लूप, एंड दिस इज द ऑप्शनल पार्ट. हमेशा ध्यान रखिएगा. And then we had taken one example using this loop, for loop, where I have used range. So since I have told you right now, just a couple of minutes back, that range begins from 0 and goes up to n minus 1. So here, when you specify for c in range n, it means the c will start taking values from 0, and its last value will be n minus 1. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to n minus 1, this range will continue. And as long as the identifier is in the range of n, it keeps on performing the statement or repeating the statement. For example, if I take n as 3, see here, if n as 3, so what happens in this case? C begins from n is 3, right? So C in range 3. 3 means the C will take 0 as the first value, and 1 as the second value, and 2 is the third value, and 3 is the fourth value. But the higher range, higher limit is 3, so it will go up to 2 only, 0 to n minus 1. So the first value of C will be 0. So see here, 2 into 0 plus 1. So what is C? C is 0. So 0 plus 1 is 1. So 1 into 2, this will give you 2 here. Then C takes it's a new value. So C will become 1. So 1 plus 1, this is 2. 2 into 2 is 4.
So it will print 4. Now C will become 2. So 2 into 3 is your 6. The next value will be 3 and 3 तक तो हमें जाना ही नहीं है because मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो है n minus 1 तक ही रेंज को लेगा. So that is why it will be printing the even numbers beginning with 2, 4, 6 and so on. And since n is 3, so 3 minus 1 तक की रेंज होगी. तो we have 0, 1 and 2. तो इन दोनों तीनों ही नंबर्स पर हमें जो सीरीज मिलने वाली है इवन नंबर्स की वो है 2, 4 and 6. Similarly, this is another example in which you'll be knowing about the third parameter of the range. And the third parameter, this is the gap value or the step value. So it will start from here. The first value of range is 1 and the last value of range will be n plus 1, and this is the gap between the numbers. So say if I have given n as 10, अगर n की वैल्यू मैंने 10 दी है तो देखिए क्या होता है. For C in range, now the first value will be 1 because we deliberately have given or have started from 1 only. Agar if we would have given n only, then it would have begun with 0. Since we have deliberately mentioned that it should begin with 1, so C in range 1, and it will go up to what is n is 10. So 10 plus 1, that is 11. तो automatically ये जो maximum limit होती है उस limit -1 तक ये loop चलता है. So the first value of this will be 1 and then gap is of 3. So after 1 the next value will be 4 because the gap of C here, the gap of these two numbers is 3. 4 minus 1 is 3. Similarly, when you say the next value कितनी होगी तो फिर इसमें आप 3 ऐड करिए. So next value will be your 7. Again the next value, again step is 3. So when you add 3 to 7, it will give you 10. And what is n? N is 10. So 10 plus 1 is 11. So it will go up to 10 only because जो लिमिट है उस लिमिट -1 तक ही ये फॉर लूप चलता है. हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा. So here this is the next program. In this example you will be able to create some designs or patterns. So see here, I wanted to print this kind of pattern, the triangle of asterisk. And you know what, we have also studied that into sign along with the string will repeat the string. So if you use asterisk sign, asterisk for multiplication, along with the string will be repeated. So see here, I have taken for C in range 5, means the C will take 0 as its first value and 4 as its last value. And there is no gap, so step value is 1 by default. So the first value of C will be 0, second value 1, third value 2 and so on. So see here, and this is repeating how many times? 0 से लेकर के 4 तक, 0 1 2 3 4 यानी 4 टाइम 0 1 0 1 2 3 4 यानी 5 times it is repeating this print statement 5 times. This for loop is repeating the underlying statement 5 times. So in first attempt C will get 0, but what will this statement do? This will print asterisk sign multiplied by C plus 1. So C is 0, 0 plus 1 कितना हो गया 1. So यहाँ पर ये asterisk केवल one time print हो गया. So this is 1 here. Now C will become 1 here. So 1 plus 1 is 2 and sign is into sign. So into multiplied by 2. So this sign will be repeated 2 times. So here asterisk is there. So can we
apply this on in Python for C in range 5, then print asterisk कितने बार C plus 1. Okay, so see here, this is the result. Any question if you have in your mind? Any question? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, बेटा while तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, इसीलिए तो अब अगला स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं। हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यस वी कैन। ठीक है, हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये मैंने आपको करके दिखा दिया, ये हम while से भी कर सकते हैं। चलो while से करते हैं। while से इसका मतलब ये है कि मुझे जाना है n is 5। चलो while से करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ C C as 0, number 1, while C less than 5 colon print, क्या प्रिंट कराना, चलो मैं इस टाइम हैश प्रिंट आता हूँ, multiplied by C plus 1 and this, okay, एंड इसके साथ में मुझे C भी बढ़ाना पड़ेगा, C भी बढ़ाना पड़ेगा। सो C, now see, we can also do using while. So देखिए इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर you have just taken range. This is the new function which is generating the range from 0 से लेकर के 4 तक, and here we have to deliberately mention or initialize the control variable by some value that is 0. Same here, C will take 0 as its first value here, and here we have given the first value as 0 to C. Now it will go up to 4, and here we have taken that you should repeat this statement up till C is less than 5. So 4 is the last value which is less than 5. So 0 1 2 3 4 तक ये इस प्रोग्राम को रिपीट करता जाएगा। तो आप ये नोटिस करिए कि ये प्रोग्राम आपके लिए सुटेबल होगा या ये प्रोग्राम सुटेबल होगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। देयर इज नो हैसल एट ऑल। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ सी दिस इज अनदर एग्जांपल for C in range 5. So again C will take 0 as its first value, and again I am repeating this sign कितने बार, 5 minus C. So what is C? C is 0 first time. So 5 minus 0 is 5. So this string is multiplied by 5, so it will give you 5 as here. Then C will take 1 as a second value, and 5 minus 1 is 4, so it will print 4 times only, then 3 times, then 2 times, then 1 time, and so on. This way you can print the
patterns. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ बोलो बोलो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड प्लीज। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप बेझिझक बोल सकते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग न्यू क्वेश्चन हियर। ओके, फाइंडिंग एंड प्रिंटिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ एन, यानी एन को जो डिवाइड कर सकते हैं वो सारे नंबर्स आप प्रिंट कराइए। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टेकिंग फॉर लूप and range. I am starting from 1 and taking up to whatever the value of n plus 1. So I am here giving 54. So 54 plus 1 is 55. So it will start from 1 and will go up to 55. Any less than 55. Okay. So if n divided by c, so what is n? N is 54 and the first value of c is 1. So 55 is 54 is divided by 1, so it will give you remainder as 0. So it will print c, means c is dividing 54. So c is the first factor. Then c will become 2. 54 will be divided by 2 as well. Remainder 0 आएगा, so it will print 2 also. Then 54 will also be divided by 3 because 54 modulo 3 is 0, and that is why it will print 3 here, and so on. So whatever are the factors of n 54, all the factors will be printed here including the number. Okay, now next is we are going to find out HCF and LCM of the two integers, and those integers are n and m. So what happens in this case, जब हम किसी भी दो integers का LCM या HCF निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, और वो लूप कब तक चलेगा? So the loop will begin from 1 and goes up to the lowest value of, or the lower value of the integers you have given. So you have given integers n and m. So n और m में जो भी minimum होगा उस तक आपको लूप चलाना है, बिकॉज बड़े तक लूप चलाएंगे तो आपको जो है वहां पर एरर इसलिए मिल जाएगी बिकॉज जो दूसरी रेंज है वो बहुत छोटी है, तो वहां पर रिमाइंडर का गड़बड़ हो जाएगा. दैट इज वाई विल हैव टू गो अप टू वेयर both integers have the same values, यानी जो n या m में जो भी छोटा है हमारा लूप वहां तक जाएगा, क्योंकि वही उस टाइम तक हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों इंटीजर्स को कॉमनली कौन डिवाइड कर रहा है, बिकॉज दिस इज लीस्ट कॉमन फैक्टर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी जो वो बड़ी वैल्यू जो दोनों को डिवाइड करती हो. तो सी हियर वी हैव यूज्ड min and min of n and m. तो इसको हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. यहाँ पर आपने ये जो फंक्शन यूज किया है, लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया है, विच विल फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज टू. n और m में जो मिनिमम होगी वो आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा. सो 1 2 मिनिमम ऑफ n एंड m प्लस 1, यहाँ तक आपका लूप जाएगा, और यहाँ पर जो बिगेस्ट वैल्यू जो दोनों को डिवाइड करेगी, m को भी और n को भी, वो कहलाएगा आपका HCF. और जब HCF आ जाएगा तो HCF को आप इन दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और HCF से डिवाइड करेंगे तो LCM आपका आ जाएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन. तो मान लीजिए आपके पास n है 8, m है 20, तो मिनिमम कितना हो गया 8 हियर, 8 प्लस 1 दैट इज 9. सो 1 से लेकर के 8 तक ही ये चलेगा. तो HCF इसमें क्या होगा, यानी 1 जो है 1 will divide n, 1 will divide 8 and 1 will divide 20 also. So
उस जगह पर पहली बार में HCF हो जाएगा 1, then C will become 2, so 2 will divide 8 and 20 as well, so HCF will be 2 in second attempt. Then C will become 3, 3 will divide 8 is not possible, it is not divisible. Similarly 20 is also not divisible by 3. तो अभी तक जो HCF है वो 2 ही रहा है. The next value is 4 and 4 is dividing 8, remainder becomes 0, and 4 is also dividing 20, remainder is still 0. So HCF will become 4. Now the next value कितने तक जाना है आपको? 1 से लेकर के 8 तक जाना है. So 5 के बाद 4 के बाद next value 5. 5 will not divide 8. 5 will divide 20, but it will not divide 8. So HCF will still be 4 because दोनों ही को डिवाइड करने वाला होना चाहिए. So 4 ही एक ऐसा इंटीजर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है. उसके बाद 5 आएगा. 5 will divide 20, but will not divide 8. The next value will be 6. 6 will not divide 8 and 20 as well. 6 के बाद आएगा 7. 7 भी दोनों को डिवाइड नहीं करता है. 7 के बाद आएगा 8. 8 will divide 8 only, not 20. So the highest common factor till this value is 4. Okay, so see here. So what will the LCM become? What will the LCM become? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 8 and 20, 160. What and divided by 4. So 160 divided by 4 will give you 40. So 40 will be the LCM. Forty will be the LCM. Now अगर हमने 30 लिया और 12 लिया तो HCF क्या होगा? चलो हम इसको करके देखते हैं. यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं. यहाँ मैंने उन्होंने यूज किया है, मैं मिनिमम यूज नहीं करूंगा. फॉर लिख देते हैं finding HCF and LCM of two integers. So पहला नंबर लेता हूं मैं m is equal to int input number n is equal to int input number. अब इसमें से मुझे छोटा वाला चाहिए, तो छोटे के लिए मैं क्या करता हूं कि इसको लेता हूं s. s जो है मैं एक काम करता हूं s, हाँ यस, हाँ गड़बड़ हो गया, सो चेंज करना पड़ेगा. यस करेक्ट. इनपुट. ओके, और नाउ if m less than n, then s is equal to m else s is equal to n. तो दोनों में से जो भी छोटा है वो s में चला जाएगा. फिर मैं क्या करूंगा, फिर चलाऊंगा for I in range